Okay, how many of you have done it? सर हो गया. Okay. Hello. Yes, hold on. We are live on YouTube. Welcome on board everyone, those who are the regular viewers from YouTube, right? We are once again back with the question based on inference, which is highly demanded in mains examinations. So welcome on board. Now, over to you. How many of you have done it? Just raise your hand. Good one, KitKat. Okay, guys, keep on raising your hands. Okay, who else apart from KitKat? Neeraj, have you come up with the answer? Yes, sir. Kirta, have you come up with the answer? Yes, sir. Okay, Jayashree, have you come up with your answer? Jayashree, are you there on live? Yes, sir. Okay, what is your answer, Jayashree? No, sir. समझ में नहीं आया मुझे. नहीं समझ में आया? नहीं. Okay, in the last class we were discussing about inference, ma'am. What is the inference? What is an inference? Okay, Madhav will tell what is an inference, Madhav. Sir, inference is outcome of the statements. It is always an implied idea Implied on behalf idea. of certain It is statement, yes, sir. right? So mathematically we can say, or algebraically we can say, Jayashree, if A equal to B. So the statement say if A equal to B and B equal to C, then by these two expressions we can derive the next one, that is equal to A equal to C. So something that you derive from a given paragraph. If you're reading this paragraph, then try to understand what is all that about paragraph it is. Having read this paragraph, think about what could be the next part of this. Next part of this, having read this paragraph. That is an inference. Okay, Jayashree, can you read this paragraph? Jayashree, are you there? Yes, sir. Read कर लिया मैंने. You're doing some activity on the back of it. No, sir. Your voice is not louder. Sir, read कर लिया मैंने. No, speak louder. You have to just dictate. क्या है मैंने? Hello, sir. Yes, I was- start reading the paragraph. Yes, you're audible. Now, can you read this paragraph? One. Read करूँ, sir. Yes. There is a way to dramatically cut down on the number of people impacted by the distress. क्या है sir? Be Disasters. careful. Be careful. Disasters. Disaster, and that is by using data. Read once again this statement. First line, sir. Yes. There is a way to dramatically cut down on the number of people
impact by distress, disaster, and that is by using data. If we Hey, are what is this line trying to say? What is this line trying to say? Sir, Wait. इस लाइन में मतलब पीपल ने अच्छा लगता है एक मेरे ख्याल से जयश्री और नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग टुडे। एकता, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट शी हैज रेड? पहले लाइन में उन्होंने क्या रीड करा था? can I explain, sir? वेट माधव, एकता, Yes, sir. just let me know what she has read and what can be the possible explanation of the first line. Sir, data can be used to find out or cut down the number of people impacted by disaster. Madhav, add on to this. Sir, by using data, we can who are impacted by the disaster, we can drastically cut down the number of people impacted by the data disasters. Perfect. So what the sentence is trying to say, there is a way to dramatically cut down the number of people impacted by the disasters, right? अगर लोग disaster से impact होते हैं, उनको किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो उनपे असर ना पड़े भविष्य में, फ्यूचर में, इस चीज से लोगों को बचाया जा सकता है। किसके द्वारा? बाय यूजिंग सम सर्टेन डेटा। अब उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया, एड ऑन किया कि हाउ इफ वी आर टू सेव लाइव्स एंड प्रिवेंट डैमेज टू द इकोनॉमी, इट इज क्रिटिकल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस, कि किस पर उसका असर पड़ेगा। डेटा ऑन दीज कम्युनिटीज कैन बी यूज्ड टू परस्यू रिस्क इन्फॉर्म्ड डेवलपमेंट। अगर आपको पता है कि कौन से एरिया में क्या होता है और वहां का डेटा पता है, उनका पॉपुलेशन के बारे में पता है, तो पहले आप उन्हें अलर्ट कर सकते हैं। तो जो कैजुअलिटीज पहले हुई थी वो दोबारा नहीं होने के चांसेस होंगे अगर आप उसके पास डेटा होगा आपका उसके पास। तो now the next statement is in the form of example. For instance, road infrastructure can be built by calculating the intensity of floods, है ना? तो हमें पता है कि कौन से एरियाज में रिवर कैचमेंट एरिया है जहां पर अगर हम कोई पुल बनाते हैं, कोई बांध बनाते हैं और अक्सर वहां पर फ्लड आ जाता है, तो अगर हमें पता है कि आने वाले दिनों में यहाँ फ्लड आएगा, तो ठीक है, वहां हम रोड नहीं बनाएंगे। तो दिस ऑल डेटा कैन हेल्प in preventing that particular damage. Got it? Jayashree, got this paragraph? Ki data can do what? yes sir. Now tell me which one of the options can be the finest option in the given option as an inference. Sir, D option, D. Option D. Okay, Ekta, what is your answer? Sir, option A. Madhav, what is your answer? Option A, sir. Rahul, what is your answer? Rahul, तो राहुल नहीं है शायद, वो उसने अपना सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए गया वो। KitKat, आपका आंसर? सर सी। KitKat explain करिए how C. Sir, because A is already given in the first sentence, so we Achha, can't. do we have any mention of both short term and long term? No. Then how can you assume that? Sir, then E should be the answer, no? None of this. Because A is already given in the first paragraph, first line of the paragraph. So how can we deduct this as a Data can reduce the number of people impacted. Now see the line, data can reduce the number of people impacted. And the statement said there is a way to drastically cut down. Are these line two same? No. Okay, so then A. Right. Jayashree, you got this key. Why it is A? Data can help reduce the number of people impacted. Data can help reduce the number of the paragraph is talking about there is a way to dramatically, कोई एक रास्ता है, तो उस तरीके से ways and means से we can prevent the catastrophe, we can prevent the disasters if we have some data. Yes sir. Got it? Why not B? C का तो बता दिया. Why not B? Data and statistics are important to and understanding the impacts and cost of disaster. There was no cost here. Data identifies the gap between the availability and the allocation of the resources. Not applied here. Any doubt?
No, sir. No, sir. Okay, please raise your hand once done. Done. Okay, good one, KitKat. Okay, Ekta, KitKat, who else? Madhav, Yes, sir. have you done this? I'm not getting, sir. You're not getting. Now, can you see there are words involved here, right? There are words involved here. I used to say to you too, there are logical words, logical connections are there, right? You can find out this. The first paragraph has taken the word use while. The other Yes. statement has taken the use of indeed. Indeed. Right? So Yes. whichever the thing that has been mentioned here, it will be restated in the second paragraph. Yes, sir. So what is the first statement here? While one can debate the economic cost and benefits of GST, the analogy with election is logically flawed. Right? Now see, there are two contexts here. Alag context. Yes, है ना, sir. we always debate with the policy of government कि इसमें इतना खर्चा लगता है फिर भी इसका benefit नहीं है. We always debate those things कि GST good है, GST bad है. We always debate certain things. Yes, sir. है ना? तो Yes, sir. in the one side we debate economic cost and benefit of GST. On the other hand, we have the analogy. Whatever we think about elections and the way the elections are held is logically flawed. When there are certain mistakes, there are shortcomings are there. Yes, sir. Now see, the last statement has taken the analogy with election is logically flawed, means there are certain shortcomings. Now, that particular context that about the election, whatever that the statement has been there in the previous statement, it is being again reiterated in the next one. What it Yes, says, sir. indeed, the concept of simultaneous elections fundamentally runs against the grain of our Westminster style federal political union. So does it speaks like negative or positive about the elections? Negative, sir. Certainly, because the other part was in the negative context. So indeed is reiterating the election part, and it is telling that simultaneous election fundamentally runs against the grain of our Westminster style of federal political union. Yes, sir. Now, in the other sentence said, one nation, one election would make sense if India were a unitary state. Hana? Yes, sir. But Now, we are what not. the other has taken, but we are Contrast. a union of state, which is philosophically and politically an essential different conception of the Indian nation states.
Now think about this. What do you think? Will that be the first statement? Simultaneous elections are a ploy. एक चाल है to keep people away from forming a government. No, sir. GST swept away the raft of the specific state-specific excise taxes and replaced them with uniform taxes. Absolutely not. Not, sir. है ना? The paragraph is 98% based on what? The concept of election, the concept sir. of federalism, the concept of unitary state. So B को हम ऐसे ही बाहर कर देंगे. C क्या कह रहा है? Simultaneous elections would require a slew of constitutional amendments. Was there any amendment in the paragraph? No, sir. Which one is the right answer? D, sir. Understood? Yes, sir. One nation, one state के बाद जो contrast word है ना, the answer lies in this. Answer lies in this. It says one nation, one election would make sense if India were a unitary state. One nation, one election तभी काम करता जब इंडिया एक यूनिटरी स्टेट होता है, लेकिन हम तो एक फेडरल स्टेट है. Philosophically and politically and essentially different conception of being a state, one state. Yes, sir. है ना? तो अगर हम ऐसी स्थिति में अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगा किसको? इंडिया के फेडरल स्ट्रेंथ को, राइट? तो यहां पर जो हम देख रहे हैं दिस वाला पार्ट, it is impacting on this one. You are able to understand, Jayashree? Sir, हाँ जी. statement is negative, sir, but inference is can positive. फिर से बोलिए. Statement is negative, sir. हाँ हाँ बिल्कुल. तो पैराग्राफ इज आल्सो नेगेटिव. देखो ना यहाँ पर इंडीड के बाद हम कौन सी बात कर रहे हैं? The concept of simultaneous election fundamentally runs against the grain of our Westminster. Yes, sir. Right? And relate this with this last statement. But inference is positive, sir. How it is positive? Inference is negative ना. Simultaneous election would compromise this. Compromise करने का मतलब क्या है? Okay, sir. Reduce it. Compromise is the negative word. Compromise करने का तो strength नहीं देगा उसको. उस strength को और weak कर देगा वो. Federal structure को weak कर देगा वो. Compromise करने का मतलब, we often say, do not compromise with your hard work. Okay, sir. What is the meaning of this? Means we will work hard. Yes. We don't compromise. Yes. Okay, is there anyone who has not understood? Jayashree, Kanika, Ekta, Neeraj? नीरज क्या है भाई? जिंदा है कि नहीं नीरज? यस सर, जिंदा हूँ. कहाँ है भैया? आपकी इन्फ्लुएंस कहाँ है आज? सर मैंने निकाला 30 था मेरा भी. अच्छा, अगला इन्फ्लुएंस आपका है. Guys, stay alert. Time given 2 minutes. Ekta, what is your answer? Option C, sir.
KitKat, what is your answer? Sir, D. Neeraj, what is your answer? Sir, C. Madhav, what is your answer? D, sir. If you happen to read only the two statements, that is the first one and the last one, now you will get to the answer. अगर पैराग्राफ की पहली लाइन और पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ोगे ना तो उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा. क्या कह रहा है? कैपिटलिज्म रेस्ट्स ऑन द बेडरॉक ऑफ लेजिटिमेसी. है ना? कहने का मतलब कोई इसको लेजिटिमाइज करेगा ना, कोई इसको एडवोकेट करेगा ना, कोई इसको प्रमोट करेगा ना, तो ये सस्टेन करेगा. है ना? तो हमने देखा क्या लास्ट वाली लाइन में? Economist Nimisha Adia has shown up that 1991 economic reforms were preceded by a shift in the popular narratives about capitalism in Hindi films. तो इस हिंदी फिल्म ने क्या किया था? इस कैपिटलिज्म के मुद्दे को ना प्रमोट किया था, एडवोकेट किया था. तब जाके 1991 से लेके 2022 तक ये चीजें आप देख रहे हैं पनपते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी आइडियाज को, किसी भी थॉट को, किसी भी पॉलिसी को उत्साहन तभी मिलता है, प्रोत्साहन तभी मिलता है जब इसके पीछे कोई बैकग्राउंड सपोर्ट हो, कोई इसको लेजिटिमाइज करे कि हाँ ये चीज जेन्युइन है, अच्छा है, सही है, तभी ये कारगर साबित हो सकता है. तो फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन आर इटसेल्फ आंसर ऑफ इट. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. So all those who have made it C, please explain what made you to choose option C. नीरज कहाँ बोल रहा है कि रिफॉर्म्स को ब्रेक लेने की जरूरत है? सर, इसमें जो सेकंड लाइन दिया हुआ है, लॉट डिपेंड ऑन वेदर वोटर्स सी बिजनेसमैन एज रोवर्स, बैरोन्स और ए मैन ऑफ एंटरप्राइज. तो इसमें सर मतलब देखिए, ये जो अपने बिजनेसमैन हमको कंपेयर कर रहा है दोनों में से. ना ना ना, आप गलत समझ रहे हैं इसको. क्या कह रहे हैं? कैपिटलिज्म रेस्ट ऑन द बेटर ऑफ लेजिटिमेसी. कोई जब उसको लेजिटिमाइज करता है तभी इससे आगे बढ़ावा मिलता है इसको. A lot depends on whether voters see businessmen as robber, barons or men of enterprise. है ना? अब इसी का एक तार्किक उदाहरण दिया इन्होंने. इस तरह की चीजें कई बार ऐसी साबित होती है कि क्या कोई वोटर, या मान लीजिए इलेक्शन के समय वोटर चाहता क्या है, वोटर चाहता क्या है कि कौन आदमी नेता बने, उसको कौन उसको रिप्रेजेंट करे. तो अल्टीमेटली जो भी हम पॉपुलर लीडर चूज करते हैं ना, तो हमारे द्वारा ही तो लेजिटिमाइज होता है कि हम किसी को सामने खड़ा करते हैं तो हमारे वो कॉन्स्टिट्यूंसी का नेता होता है. तो हम लेजिटिमाइज करते हैं ना उसे खड़ा होने के लिए, या फिर उसको लीडर बनने के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए. तो उसी चीज को उन्होंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया. अ लॉट डिपेंड्स ऑन वेदर वोटर्स सी बिजनेसमैन और रॉबर्स. है ना? जो मतदाता है वो क्या चाहते हैं, बिजनेसमैन उनको रिप्रेजेंट करे या एक रॉबर, एक अपराधी एज अ मैन ऑफ एंटरप्राइज. तो ये किसके लेजिटिमेसी से? वोटर्स की लेजिटिमेसी है, ताकि वो इनको चुनते हैं. अब उसी चीज को उन्होंने एग्जाम्पल का कोट दे दिया यहाँ पर. फर्स्ट पब्लिश इन 2013. निमिषा आदिया का जो किताब है उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इसी चीज को हमने क्या देखा कि हिंदी के फिल्म जो थे उस समय के, वो इस कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते थे, प्रमोट करते थे, उसके बारे में एक तरह से एडवोकेट किया करते थे. तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को किसके द्वारा पुश मिला? वोटर्स के द्वारा या हिंदी फिल्मों के द्वारा? हिंदी फिल्म. तो ये इस हिंदी फिल्म ने उनको लेजिटिमाइज किया, तब जाके लोगों ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया. Hope everyone has understood this. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, has anyone done it? किसी ने किया इसको? सर कर रहे हैं। Sir, I think सर डन। Okay, good one. Neeraj, what is your answer? Sir, B. What is all paragraph? What is all about the paragraph? सर IoT मतलब जो सिम अपना है ना वो IoT प्लेटफॉर्म को यूज करता है और उससे वो क्या है कि अभी जितना मतलब बहुत इजीली यूज नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में बताया है। हाँ, there are some certain problems. अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो it shows trouble है किसके साथ? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ, yes, sir. है ना? तो प्रेजेंटली इट इज रनिंग अगेंस्ट द करंट लाइक टेलीकॉम रेगुलेशंस, है ना? तो ये उस नॉर्म्स के अगेंस्ट काम कर रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाउ दे आर ऑब्लाइज्ड टू वेरीफाई ईच कस्टमर्स बिफोर रिसीविंग द सेम। अब इसको कॉन्ट्रास्ट में दे दिया, however if cars must already have cellular connectivity to the network operator centers when they roll out the assembly line, it is impossible for the telecom service provider to complete the customer verification for the future owner of the car before activating the set. तो यहाँ पर इसमें कुछ जो प्रॉब्लम है, जो इशू है ना, उसके लेके डिस्कस हो रहा है पैराग्राफ में। इट इज दैट इज व्हाई वी आर, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ट्रबल है ना उसको दूर किया जाना चाहिए क्या, ताकि ये चीजें ना हो। Option D, sir. ऑप्शन D. डी, C, sir. ऑप्शन डी और ऑप्शन बी? D, sir. बी फॉर बॉल, No, sir. D for done. D for Don. How man? कैसे माधव? Can you explain this? Sir, we are facing trouble, sir. We are facing problem. Trouble. ठीक है। तो what the D statement says, the approach of connected world is still ahead of us. No, sir. The statement must have some problem, na? The statement must have some shortcomings, na? Yes, sir. You got it? Why not D? Yes, sir. Jayashree, you got it? Why not D? जिनका और भी ऑप्शन था, how many be? Any doubt in it? I'll explain once again. The trouble with Internet of Things approach is that it runs contrary to the current Indian telecom regulations. So this is an issue. Telecom SS providers, telecom service providers are currently obliged to verify each customer before issuing them a SIM. ठीक है? If, however, if cars must already have cellular connectivity to the network operating centers, when the roll off the assembly line, it is impossible for telecom service provider to complete a customer verification for the future owner of the car before activating this. So this is what against the norm these actions are being performed. Problem. After, however, so these only after contrast become an example for how the trouble is arising with Internet of Things. Got it, Madhav? Yes, sir. Chalo. So guys, that's all for the reading section today.
just after 15 to 20 minutes, we'll share the link for the grammar part. We are covering mains pattern of examination these days. The moment we are approaching to our prelims now, we will fight back with the prelims mock. लेकिन इन दिनों हम सबसे ज्यादा मेंस वाले मॉक को फोकस कर रहे हैं. रीजन बीइंग कि पहले हमारा टारगेट अभी मेंस का होना चाहिए. तैयारी पहले हम लोग मेंस की करेंगे, उसके बाद अप्रोच हमारा प्रीलिम्स वाला होगा. So these questions are based on the mains paper, IBPS, PO, SBI, PO, clerical. You can just watch these sessions on the YouTube as well as on Zoom also. So regularly we are having a class on Zoom, that is newsprep.com, where the subscription can be availed. So stay tuned for further updates. Thank you.